સુરત ભૂતિયા ડિમોલેશન મામલે વધુ એક ચોંકાવનારો વિડીયો। પાલિયા એલિગન્સના ઉદ્ઘાટનમાં મોટા માથાઓ રહ્યા હાજર। પાલિયા એલિગન્સનો ઉદ્ઘાટન સમારોહનો વિડીયો સામે આવ્યો છે। બિલ્ડર સંજય લાખાણીના ઉદ્ઘાટનમાં હોદ્દેદારો પણ હાજર હતા। સરકારી ગાડીઓ લઈને અધિકારીઓ પહોંચ્યા હોવાનો વિડીયો। तो बिल्डर संजय लाखाणीना उद्घाटन में होद्देदारों पहुंचा तेने लईने अनेक सवालों ऊभा थई रह्या छे अने तर्क वितर्क करवामां आवी रह्या छे। भूतिया डिमोलेशन मामले एक पछी एक चौंकावनारा खुलासा सामे आवता होय तेवी स्थिति छे। एवामां एक विडियो हवे सामे आव्यो छे जेमां पालिया एलिगन्सना उद्घाटन समारोहनो आ विडियो सामे आव्यो छे, जेमां बिल्डर संजय लाखाणीना उद्घाटनमां होद्देदारों पण हाजर रह्या होવાનો आ विडियो अत्यारे वायरल थतो जोवा मळी रह्यो छे। तो आ वधु एक चौंकावनारो विडियो छे तेने लईने भूतिया डिमोलेशन पर स्थानिकोमांथी लईने तंत्र सुधी अनेक सवालों लोकोना मनमा ऊभा थई रह्या छे। तो एक पछी एक अलग अलग निवेदनों भूतिया डिमोलेशन माटे सामे आव्या होय त्यारे वधु एक आ विडियो चौंकावनारो सामे आव्यो। सूरत में डिमोलेशननी कामगीरी पर मनपा अधिकारीओए मोटो खुलासो कर्यो छे। सिंगणपुरमां थयेली डिमोलेशननी प्रक्रिया संपूर्णपणे नियमों अनुसार और रूटीन होवानो अधिकारीए दावो कर्यो। बाजुना रहीश द्वारा करवामां आवेली फरियादना अनुसंधाने ज आ समग्र कार्यवाही हाथ धरवामां आवी हती। मनपा द्वारा नियम मुजब नोटिस आपवा छतां समय मर्यादामां दबाण न हटाववामां आवता डिमोलेशन करायुं हतुं। भाजपना नेताना दबाण हेठळ के कोई टार्गेट करीने कामगीरी कराई होवाना आक्षेपोने अधिकारीए पाया विहोणा गणाव्या छे। जो कोई दबाण के राजकीय प्रेशर होत तो डिमोलेशननी कामगीरी शक्य ज न बनी होत। नासीनगरमां गयेली डिमोलेशननी कामगीरी જે કરવામાં આવી તે અંગે તપાસ સમિતિએ ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરી રહી છે। આમાં ઇરાદાપૂર્વક કશું હોતું નથી। સામાન્યત જેમ એમણે ફરિયાદ કરી છે એ મુજબ જ એમની પર ફરિયાદ થઈ છે અને એના કારણે જ આપણે એમને લીગલ વેમાં જે ચકાસણી કરી અને નોટિસ આપવામાં આવેલ છે। એટલે એવું કંઈ વસ્તુ છે નથી કે ભાઈ એમને ટાર્ગેટ કરી નોટિસ આપવામાં આવેલ છે। એ બી વહીવટી પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે જે નોટિસ આપવામાં આવેલ છે। નાસીનગરની તપાસ કમિટીમાં હું એક સભ્ય તરીકે છું। નાસીનગરમાં જે તપાસ કમિટી જે છે એની એક મિટિંગ થઈ ગઈ છે અને એમાં ટોટલ જે પણ કાર્યવાહી થઈ છે એના તમામ વિગતો માગવામાં આવેલ છે તપાસ કમિટી દ્વારા। એટલે તપાસ કમિટી દ્વારા જે બી સમયમર્યાદામાં વિગતો માગવામાં આવેલ છે વિગતો આવ્યા બાદ જ તપાસ કમિટી યોગ્ય રીતે તપાસ કરી અને આગળ પ્રોસેસ કરશે। सूरतना सिंगणपुर खाते भाजप नेताना फ्लेट पर पत्रा डिमोलेशन मामले कतारगामना झोनना कार्यपालक इंजीनियर KL वसावानी भूमिका शंकाना घेरामां छे। नासिरनगर डिमोलेशननी तपास माटे गठित 6 सभ्योनी कमिटीमां तेमनो समावेश कराता सवाल उठ्या छे, कारण के पोताना ज विस्तारमां गैरकायदेसर प्रवृत्तिने प्रोत्साहन आपवानो तेमना पर आक्षेप छे। भाजप नेताना घरनुं डिमोलेशन बीजी जूने कर्या बाद पालिका बधो सामान परत मूकी गई हती। आ घटनाना 2 दिवस बाद 4 जूने डेप्यूटी इंजीनियरे फरियादीने ज वळती नोटिस फटकारी। नोटिस में फरियादीना घरनी बारीनुं बांधकाम बिन अधिकृत गणावी 3 दिवस में पुरावा रजू करवा आदेश कराता तंत्रनी कामगीरी सामे रोष व्याप्यो छे। अमे पालोपाक सोसायटी में 2 नंबर में रहीए छे अने अमारा घर पाछळ इलीगल दुकान तो हती ज पण एनी उपर पण पतरानुं बांधकाम करवामां इलीगल रीते आव्युं हतुं। तो अमे अरजी कोर्पोरेशन में नाखी हती अने ए लोको आवीने तोड़ी गया। 2-3 दिवस पछी तोड़ी गया अने 2.5 कलाक 2 कलाकनी अंदर पाछो सामान मेकी गया अने 2 दिवस पछी एने पाछुं फ्रेक्चर बनावी आपवामां आव्युं छे। हवे आ पाछुं तोड़ाई आपो अमारी नम्र विनंती छे आटली।